Following is the balance sheet of Kadam, Shinde and Chavan as on 31st March 2019. This is a solved example on page number 230. Second, they were sharing profits and losses in the ratio 1/2, 1/6, 1/3. अब अगर कोई इस तरह से प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है 1/2, 1/6, 1/3, I'll make the ratio. This is the fraction given. So I will multiply this by 3. This is not to be multiplied, and this by 2. So I will get 3, 1 and 2. This is their ratio, 3:1, 1:2. On the above date, the firm was dissolved and assets and liabilities realized. Kadam took over furniture stock and agreed to pay creditors at a discount. Shinde took over bills receivable and paid bills payable in full. Dissolution expenses. Chavan became insolvent and no amount was recovered from his estate. अब चवान का कैपिटल अगर आप देखो तो पहले ही डेबिट है, लेकिन सिर्फ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये अभी हम लोग उसको इंसॉल्वेंट नहीं बोलते. सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद, उसके बाद भी जब उसका डेबिट बैलेंस आएगा तब हम लोग उसे इंसॉल्वेंट कहेंगे. So we have to basically dissolve the firm and one of the partner is getting insolvent. And the insolvency loss of one partner will be shared. मतलब चवान का जो insolvency loss है वो कदम और शिंदे शेयर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. Okay. Now we will have to make realization account, partners capital account and bank account. Let us draw. So Kadam, Shinde and Chavana were sharing profits losses in the ratio 1/2, 1/6, 1/3. So Kadam is 1/2, Shinde is 1/6, Chavan is 1/3. What we are going to do here is we'll make the denominator common. The common denominator is 6. So I'll multiply here by 3, here by 1 and here by 2. So it will be 3/6, 1/6, 2/6. So ratio is 3:1:2. और अब ये डिसोल्यूशन हो रहा है. कैपिटल अकाउंट कदम एंड शिंदे का क्रेडिट बैलेंस है, कदम का लोन अकाउंट है और चवान का डेबिट बैलेंस है. सो लेट अस पोस्ट द बैलेंसेस टू द कैपिटल अकाउंट्स. By balance brought down, it is 36, 32,250 and 12,750. 36,000, 32,250 and here is two balance brought down 12,750. Okay. अब हम लोग देखेंगे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है क्या है. जनरल रिजर्व है 18,000 और पीएनएल अकाउंट भी है 2,250. तो जनरल रिजर्व इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1:2. सो 18,000 का जनरल रिजर्व आप डिवाइड करोगे 18,000 into 3/6, 18,000 into 1/6 and 18,000 into 2/6. This will be 9,000. This will be 3,000 and this is 6,000. Okay. So by general reserve, $9,000, 3,000, 6,000. Then we also have profit and loss debit balance. Now this is accumulated loss. This should also be divided among the partners in their old ratio. Okay. 2,250 आपको डिवाइड करना है पार्टनर्स में,
तो वो होगा टू P&L account कसं होईल डिव्हिजन त्यांचं? So it is 375 for Shinde, 750 for Chavan, 1125 for Kadam, P&L account. All accumulated profit losses are transferred. Now we have to start with dissolution. We will transfer all the assets to except bank to realization. तो सारे assets को हम लोग transfer करेंगे. Building, machinery, furniture, stock, debtors, bills receivable, all will be transferred to realization. I'll say two sundry assets. आप यहाँ पे building, machinery, write everything on inner side and then add it and show it on the outer side. That is the correct method of presentation. It is 28,500, 20,250, 4,500 furniture. Then stock is 30,750. Debtors is 15,000. And bills receivable is 9,000. You will write the total outside. So do the total of this, all the assets. Here you will write down 1,08,000. Then you will transfer all sundry liabilities. But in sundry liabilities, partners capital, loan account is not included. So will not include Kadam's loan account in sundry liability. It will be only sundry creditors and bills payable. 18,750 and 11,250. Creditors is 18,750 and bills payable is 11,250. And this is 30,000. Now, if all the accounts are closed, बैंक अकाउंट का बैलेंस है 4,500, वो हम लोग इधर डाल देंगे बैंक अकाउंट में. To balance brought down 4,500. On the above date, the firm was dissolved and the assets realized as under. Building 27, machinery 18, debtors 27,500 and goodwill 1,350. But goodwill is not even mentioned here. So how will you write down the goodwill? Goodwill जो realize हो रहा है
वो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है, लेकिन वो रियलाइज्ड है, तो इट इज एज गुड एज goodwill is realized, not, we cannot see it in the balance sheet, it is as good as unrecorded asset realized. So total assets realized will be in the realization account by bank account. You will write down here what are the assets realized. So it is building 27, machinery 18. तो हम लोग इधर लिखेंगे बिल्डिंग 27,000, machinery 18,000. Then what else? Debtors 27,500. Goodwill 1350. Total is 73,850. Kadam took over furniture and stock at 30,000 and agreed to pay creditors at a discount 750. तो ये तो रियलाइज हो गया है, ये हम लोग बैंक अकाउंट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन 73,850. Kadam has taken over furniture and something. So by Kadam's capital, furniture and stock is 30,000 और क्रेडिटर्स पे करेगा वो एट अ डिस्काउंट, तो उसने क्रेडिटर ले लिया 18,000 के, तो कदम तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा टू कदम्स कैपिटल सन्ड्री क्रेडिटर्स टेकन ओवर 18,000. यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन, Kadam has taken 18,000 के creditors and to realization he has taken over furniture and stock for 30,000. Done both the entries. Shinde took over bills receivable at 7,800 and paid bills payable full. Okay, तो शिंदे ने asset ले ली है 7,800 पे. I'll say buy Shinde's account 7,800 to Shinde's capital account. पूरा बिल्स पेबल उन्होंने बोला है कि वो पे कर देगा शिंदे 11,250. सो शिंदे के कैपिटल में आएगा बाय रियलाइजेशन, मैंने ऑलरेडी लिखा है तो मैं बस इधर अमाउंट लिख देती हूँ 11,250 and 7,800. Asset and liability taken over by partners. Now next, dissolution expenses amounted to 2,400. To bank 2,400. By bank 2,400. अब मेंशन तो नहीं है, लेकिन कदम का जो लोन अकाउंट है वो तो पे ही करना पड़ेगा बैंक को, तो कदम को लोन पे करना पड़ेगा 11,250. वो हम लोग बैंक के थ्रू करेंगे. इवन दो नथिंग इज मेंशन, वी विल पे ऑल द लायबिलिटीज बाय कदम्स loan 11,250. We will not pass the loan to Kadam's account. It's because we don't guarantee capital repayment. लेकिन ये लोन था तो उसे तो गारंटीडली पे करना चाहिए, तो ये कदम का लोन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, हम लोग उसे पहले पे कर देंगे. Now all the other transactions of dissolution is done. Now what remains is we'll find out realization profit loss and we'll give this profit loss to old partners in old ratio. Then we'll try to balance the capital accounts. Now see if it is Chavan is becoming insolvent,
उसकी इंसॉल्वेंसी का लॉस निकालना पड़ेगा और वो लॉस बाकी के पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे. सो विल फर्स्ट फाइंड आउट रियलाइजेशन प्रॉफिट. There is a mistake in the sum given in textbook. Debtors are 15,000, but they have shown that they have realized for 27,000. So this is wrong. They cannot be realized for 27,000. So they are only realized for 7,500, and we should make the changes accordingly here. Now the total profit is 18,000, which is given to all three partners in their profit sharing ratio by Kadam, Shinde and Chavan. तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या क्या आएगा उनको, और 3:1:2 रेशियो है ना उनका. ये 3,000 होगा, ये 6,000 होगा और इसका होगा 9,000. ये लॉस आ गया. It will be given to the partners to realization 9,000, 3,000, 6,000. Now we'll try to balance partners capital account. इसमें चवान इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो चवान का इंसॉल्वेंसी का जो भी लॉस है वो रिमेनिंग पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे. अब नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. चवान तो इंसॉल्वेंट हो गया, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है. तो चवान का क्या है इंसॉल्वेंसी लॉस, वो देखते हैं हम लोग. $13,500 is his insolvency loss. This comes 19,500. Now this 13,500 should be shared by the remaining partners, and as given, it should be done in the profit sharing ratio. So the insolvency loss of 13,500 of Chavan will be shared by Kadam capital account, Shinde capital account in their profit sharing ratio. So this is 3,375. Okay, and it will be to Chavan's capital account. Okay. Now, as Chavan has already become insolvent, we have shared this loss also. Now we'll try to balance these accounts. और जितना इनका कैपिटल का बैलेंस आता है उतनी कैश उन्हें पे कर देनी है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है. अगर फिर भी सपोज कदम और शिंदे का हम लोग अभी कैपिटल बैलेंस निकालते वक्त अगर सपोज कदम जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका भी इंसॉल्वेंसी का लॉस शिंदे शेयर करेगा और फिर रिमेनिंग कैश शिंदे को मिलेगा. ओके, तो जो जो इंसॉल्वेंट होते हैं उनके लॉसेस बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर शेयर कर लेते हैं. तो अब हम लोग कदम को पहले टैली करने की कोशिश करते हैं. Kadam is 36,000 plus 9,000 plus 18,000. This is here 63,000 minus 30,000, 1125, 9,000. So Kadam's capital balance comes to be 12,750.
He is solvent. Now let us go with Shinde. 32,250 plus 3,000 plus 11,250 . $31,950. So both the partners are solvent. Now you will give this money to them through bank. By Kadam Capital, by Shinde Capital. It is 12,750 and this is 46,500. So 31,950. And now let us try to tally this. So now your bank account is getting tallied and the sum is over. Even though a partner became insolvent, उसका insolvency का जो भी loss था वो solvent partner में profit sharing ratio में share कर दिया. And other realization is done in the same way that we will do. जसं आपण बाकी काही realization करतो तसंच हे पण आहे. म्हणजे सिंपल डिझोल्युशनचं रिअलायझेशन आणि इन्सॉल्वन्सी सेम. Assets are transferred, liabilities are transferred, assets realized, liabilities are paid over. That's a simple realization. Insolvent अगर हो गया एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर, अभी यहाँ पे देखो जैसे चव्हाण इंसॉल्वेंट हुआ उसका लॉस कदम और शिंदे ने शेयर किया. अगर आगे जाके शिंदे भी इंसॉल्वेंट होता तो उसका लॉस सिर्फ कदम शेयर करता और सिर्फ कदम को पैसे मिलते एंड में. Okay, this is how insolvency of one or more partner works.